Yep. Cool. Okay, so we'll cover the two CLV methods. Start उधर से कर लेंगे. पहला वाला in case of an existing company and the other one is in case of a new company wherein we don't have all the data. In which case we use the a multiplier wala concept which I touched upon while solving a question paper. Maybe we'll go through it thoda detail mein, and we'll take the question that we discussed in class, in our class at least. तो इसको मैंने existing company नाम दे दिया. So it is given that the churn rate is 25, therefore the retention rate also we indirectly know. Interest rate is given, which is that discount wala thingy. Growth rate is given. माने growth rate of customers is given to us. I'm not sharing the screen, sorry. So churn rate, as I've taken the just copy pasted the data. If and question में directly दिया होगा क्योंकि sample question paper और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर दोनों में डायरेक्टली दिया था. ऐसा कुछ उन्होंने कॉम्प्लिकेट नहीं किया था मामला. सो जस्ट राइट डाउन दैट एट द टॉप लेफ्ट ऑफ योर स्क्रीन. ठीक है. अभी अगर हमें ये रैंडम कुछ मान लो 15-20 साल के लिए या 15-20 टाइम पीरियड के लिए हमें जनरेट करना है. सो वी विल यूज दिस. विल राइट द फर्स्ट एंट्री. विल क्लिक ऑन सीरीज in this from this drop down. Click on columns here. Step value is 1 and stop is say 15 or 20 or whatever. Arshia, does this make sense? How we created this series? Yeah. Cool. Then we have number of customers we have to start with, right? Is it No. given 100? No, Or so assume- we aren't given that information, but we will be assume that no, we will be given investment in 0th year. Okay. So that will be 500, which will be the first step we do, which is profit. So in first year it is minus 500. Okay. And because growth rate is given to us, okay, and the first year we'll have to assume something because this was a case done in class. I don't remember exactly what was done, but there's no way for us to arrive at 400 based on any of the information. So this we'll have to assume. And if not assume, it will be given to us in some way. So that is fine. After that, we'll use the growth rate wala thingy, which is this. So I just multiplied the previous year ka profit with 1.05 to get to the next year ka profit. Does this make sense, Arshia? Yeah. Wait, we have to freeze the four now. We will have to freeze the growth rate जहाँ पे भी हमको दिया है वो. Yeah. उसके बाद again क्लास में केस किया था. Expected number of customers, either we start with a neutral number like 100 or it will be given in the question. For now, we'll start with 100. We'll assume that it was given to us in the case. Initial number of customers or something like that, whatever. This will be, for sure, this will be given to us. There's no other way to find that out. So customers is given to us, and then we'll use the retention rate wala formula, retention rate wala figure to arrive at question year 2 में या period 2 में कितने बचे हैं. This can be time, period, years, months, कुछ भी हो सकता है. So this also makes sense, right, Akshay? Yep. And we have to arrive at CLV का figure somehow. Correct. So this is number of customers we have. अब क्या कर सकते हैं. प्रॉफिट हमारे पास आ गया, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज प्रॉफिट पर कस्टमर ऑब्वियसली. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा हमको.
Does this make sense? हाँ मैंने बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. So most all of this we should either have or should be able to find out from the question. This also we should have कितने साल के लिए करना है, and this also we should have somehow. Cream color में जो information है, all of that should be available to us somehow. Only after that will we be able to find out. Right. Now, if you want to find out the CLV of this, so I think we'll do the NPV of the profits and divide it by the number of customers to find out the CLV. Number of average profit per user से divide किया था पहले. That was because we had divided the total profit divided by average profit per customer, because average profit per customer was given to us. So we have to work with the information that is available to us. And for people watching the video, to my left is Soham. मैं उससे बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे randomly बात नहीं कर रहा. So अभी हमें वो information available नहीं है. So we'll have to CLV would be NPV of gross profit divided by number of customers. Because this numerator will be for all customers, and if we divide, we'll get one customer ka lifetime value. So NPV we do using the NPV formula. Discount rate is given to us as interest rate, I mean whatever, and then we put in the cash flows. This will give us the NPV, but we don't want the NPV. We want to divide it by the number of customers. So this is the CLV. Now, if you remember finance वाला class, CLV हमको मिलता था considering के सारे cash flows हो रहे end of year, right? But if we want to bring that up to the beginning of the year, so we would have to multiply the discount factor by 1 plus R. So if the thing would look something like this, right? But if you want to bring it to the beginning of the year, we had to make an exception. We had to multiply it by 1 plus R. Do you remember this from Taral sir's class? Arsha, does this make sense? Does this sound familiar? yeah Cool. yeah. So this is default, which is end of year calculation. They might ask you to do middle of year calculation or beginning of year. So if they do beginning, it is clear. It is this multiplied by 1 plus R. Correct. So now, so generically, doesn't this formula 1 plus R to the power of X, if we say for now, if this is the overall formula for now, where depending on when we are calculating the CLV, the value of X will change. The value of X at the beginning of the year will be something else, end will be something else, and middle will be something else. Yes. If it is end of the year, we don't multiply by anything, which is as good as multiplying by 1. So anything to the power of 1, so anything to the power of 0 will become 1. So if the default state is there, wherein we are calculating CLV at the end of year, or we are assuming that cash flows are coming to us at the end of year, so X will be 0. In the beginning of the year, we are multiplying it by 1 plus R only. That's what we discussed starting while doing this. So X value of X will be 1. Arsha, does this make sense? Yes. Sure. Yep. Cool. Now middle is arbitrary. So where exactly in the year we are doing this will change that factor. But we are taking it mota, so we'll just do an average. See? This is the, now imagine a dynamic workbook wherein this is not present. ठीक है? ये है ही नहीं. मान लो ये है ही नहीं हमारे पास अभी. ठीक है? There is a drop down here, select option or something like that, whatever. और इधर एक drop down है which has beginning, end and middle. And if you select end, तो ये CLV calculation will convert to beginning wala mode. Otherwise, it will be whatever you select here. Select from drop down or something like that. Okay? So how do we achieve that?
So we have to make drop down using the data validation feature. So we go to data tab, we select data validation. We have to click on allow list, and now the list we have to write it down somewhere. It could be on another sheet, it could be another workbook also, I'm pretty sure. But अभी हम हमारे पास इधर हमने एक मैपिंग बना के रखा है कि बिगिनिंग का ये मतलब होता है, एंड का ये मतलब होता है। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे अगर, और ओके दबा देंगे। अब आप देखो कि एंड, मिडिल और बिगिनिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो, बट इससे कुछ ड्राइव नहीं हो रहा। नो फॉर्मूला इज बीइंग ड्रिवन हियर। अर्षा, यू विद अस राइट टिल नाउ? Yeah. Cool. Yep. सो इससे हम इसका फॉर्मूला डायनामिकली ड्राइव नहीं कर रहे अभी तक। नाउ हाउ डू वी मेक दैट हैपन? विल डू दैट। उसके लिए पहले एक दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा मेरे को, VLOOKUP. सो पार्क दिस फॉर नाउ, I'll open a new sheet, give you a grounding in what is VLOOKUP, and then we will come back and build the logic so that everything एक बार में लॉक हो जाता है. I know this is like we are forking down another path altogether, but I don't see any other way to explain this. Now, for example, यहाँ पे सोहम, भर्ग और अर्शिया लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे उनके मार्क्स लिखे हैं। तो 100, 90, 80, 95 ऐसे मार्क्स लिखे हैं, ठीक है। एंड डिस्प्ले मार्क्स करके इधर एक ऑप्शन आ गया, ठीक है। यहाँ पे तू जिसका भी नाम लिखेगा उस बंदे के तेरे को मार्क्स चाहिए, उस इंसान के मार्क्स चाहिए। तो तू क्या कर सकता है, एक तो तरीका हो गया नेम मार्क्स। तो एक हो गया इफ दिस इज इक्वल टू दिस then this, otherwise if this is equal to this then this, otherwise this is equal to this then this। ये एक तरीका हो गया, ठीक है। कुछ तो कॉमा का कुछ या कुछ सम कॉमा फकअप इज हैपनिंग। यू वांट इतने ब्लैंक क्यों डाला? हाँ, इसके अंदर इफ भी तो होना चाहिए। हाँ, तीनों का होगा। माय बैड, सॉरी। सो अभी अगर मैं इधर अब भर कर दूंगा ना तो मार्क्स अपने आप चेंज हो जाएंगे। अच्छा, बट दिस इज अ वेरी, कितना 3 इफ हो गए इतने छोटे से केस। So this is a very complicated thing. So इसका एक वर्क अराउंड है VLOOKUP। अर्षा विथ अस? Yeah. Cool. तो इसका वर्क अराउंड है VLOOKUP। VLOOKUP क्या करता है, लिटरली लुकअप करता है। माने लाइक इफ यू रिमेंबर लाइक ओल्ड रेफरेंस बुक्स या ओल्ड टेक्स्ट बुक्स में, नॉट रिमेंबर, इफ यू हैव लाइक यूज देम समटाइम, तो लुकअप टेबल्स होते थे पीछे कि इफ यू वांट टू लुक अप अ पिन कोड से, तो यू वुड लिटरली सर्च फॉर अहमदाबाद, उसका पिन कोड कहीं पे दिया होता। सो दैट्स अ लुकअप टेबल। So you are going to some other source of truth, finding out your entry from the hundreds and thousands of rows, and then उसके corresponding की तुम्हें जो भी वैल्यू चाहिए वो तुम पुल कर रहे हो। सो अहमदाबाद के बाजू में फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन लिखा होगा, जिप कोड लिखा होगा, स्टेट लिखा होगा, रेलवे स्टेशन कोड लिखा होगा। इफ यू वांट रेलवे स्टेशन कोड तो तुम बोलोगे कि गो टू दिस टेबल, पुल कॉलम 4 corresponding to Ahmedabad city. That's what you want to do. Now you will do the same thing here. You want to look up this thing. You want to look up Soham in this table. We'll freeze it. And you want to pull out information which is stored in column number 2. How column number 2? I'll show you. Because अगर if you remember, ये लाल वाला याद रखो, B और C हमने select किया है, तो this is column number 1 and this is column number 2. That's why column number 2. कि column 2 का डेटा हमें चाहिए when you search for value of this in this table. तो वो क्या करेगा, सोहम को सर्च करेगा इधर लेफ्ट मोस्ट कॉलम में। सोहम इधर इसको मिल गया, इधर रुक जाएगा, और वो देखेगा कि भाई इसको क्या चाहिए, सेकंड कॉलम में जो भी है वो उसको पकड़ा देगा, तो 100 पकड़ा देगा मुझे। और फिर लास्ट आर्ग्यूमेंट विल बी एग्जैक्ट मैच, कि हमें एग्जैक्टली मैच करे तो ही चाहिए मुझे। यू जस्ट टाइप फॉल्स और यू एरो की से तुम नीचे जाते हो। Okay, true is approximate. ट्रू, नो, ट्रू का कुछ एक ऑब्सक्योर यूज केस होता है, बट नेवर, मतलब आई हैव नेवर यूज्ड Got इट। it. तो फॉल्स कर Just दें। to test the algorithm, if you write name here, then marks will pop up there.
Yes. Why? Because we have selected the entire table including the column headers. So let's check. Yes, got it, got it. अगर हमने इतना ही किया होता और नेम करते तो एरर आ जाता. ठीक है. सो अभी मैं अगर अर्शिया कर दूंगा, और सॉरी इधर नहीं, अर्शिया कर दूंगा इधर मैं अगर, तो 95 वर्क कर दूंगा तो 90. अभी ड्रॉप डाउन के साथ लिंक करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा दिया, डेटा में गए, डेटा वैलिडेशन में गए, पुल फ्रॉम लिस्ट किया, इसका सोर्स है ये नाम की लिस्ट, और एंटर दबा दिया. तो अब क्या है, सॉरी कुछ गलती करी है, माय बैड. लिस्ट, ओ सॉरी, सिलेक्ट ढंग से नहीं हुआ था. हाँ. तो डेटा वैलिडेशन का नाम डेटा वैलिडेशन इसलिए क्योंकि इट इज मेंट फॉर कि भाई इस सेल में यही वैल्यूज अलाउड है, इसलिए इट्स कॉल्ड डेटा वैलिडेशन. यू नो लाइक यस और नो ही कर सकते हो, मेल और फीमेल ही कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल. सो दैट्स हाउ यू माइट रिमेंबर कि डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, क्योंकि तुम ड्रॉप डाउन इधर सर्च भी करोगे ना तो भी मिलेगा नहीं, और फिर भूल गए कि कहाँ है तो इधर तो सारा बहुत सारे मेन्यू होते खो जाएंगे. ठीक है अर्षा, समझ गए ना लिंक कैसे करेंगे हम, ड्रॉप डाउन कैसे Yeah, करेंगे, सॉरी. yeah. हाँ. अब आ जाते इधर. तो अब हम CLV के फॉर्मूला को थोड़ा चेंज करते हैं. हम बोलते हैं कि इफ, नहीं, हम बोलेंगे NPV रेट इज interest rate, cash value flows is this. Now we will have to multiply it by 1 plus interest rate to the power of something, and that something has to be dynamic. So how will we do that? We'll incorporate the VLOOKUP thing here. क्योंकि if you remember VLOOKUP हमें यहाँ क्या देता था, डायरेक्टली दे देता था जो चाहिए हम. तो यहाँ पे अगर हम NPV, ये डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं, सॉरी. NPV कर लिया अगर हमने, ये फॉर्मूला जो अभी मैंने लिख के दिया था, इनटू 1 plus interest rate to the power of something dynamic, which will be the output of VLOOKUP formula. तो VLOOKUP लगा दिया. What do we want to look up? Whatever is given in the drop down. इधर ड्रॉप डाउन है, भूलना मत. ड्रॉप डाउन का एरो ओनली अपीयर्स व्हेन यू हवर ओवर इट, व्हेन यू आर नॉट राइटिंग अ फॉर्मूला. अभी नहीं दिखेगा क्योंकि वी आर इनसाइड cell J11 right now. So we want to look up this. Where do we want to look it up? We want to look it up here in this entire table. ये आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हो, मैं कीबोर्ड शॉर्टकट से कर रहा हूँ, बट या where, what column number 2, this will be false, False. and that's it. And obviously, sorry, my bad, You have to you divide still have to divide by what did you plus divide by 100 I think. So अगर तुम देखो कि बिगिनिंग वाला अभी ड्रॉप डाउन इज एट बिगिनिंग, और ये हमने कैलकुलेट किया था मैन्युअली बिगिनिंग को, और वो दोनों मैच कर रहे हैं, मतलब फॉर्मूला सही से लिखा है हमने. और एंड पे जाके देखिए तो 281.27 आ रहा है, मतलब मैच हो रहा है. मतलब हमने CLV के फॉर्मूला को इसके साथ सक्सेसफुली लिंक कर ली. अर्षा समझ गई? Uh, right, yeah. You understood the flow, right? The nitty-gritties, you can watch the video again. Hmm. Sure? Yep. Okay, cool. We'll move on. तो ये एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए. नाउ क्लास में आई नो कि एग्जिस्टिंग कंपनी में ड्रॉप डाउन नहीं किया था, बट एग्जाम में अगर ड्रॉप डाउन पूछना है उनको तो वो कहीं पे भी पूछ सकते हैं. ओके, नाउ वी विल कम टू न्यू कंपनीज वाला अगर केस है, तो इसमें वो मल्टीप्लायर वाला जो होल कॉन्सेप्ट कम्स अप हियर. नाउ दिस इज बिकॉज न्यू कंपनीज में क्या होता है, हम सब कुछ अज्यूम करते हैं, वी हैव नथिंग. सो उधर हम वापस से टाइम फ्रेम कुछ भी ले लेते हैं. इन्होंने क्या लिया, लेट मी सी. ओके, दे हैव टेकन लाइक 360 और सम ह्यूज नंबर. आई वी आर नॉट टेकिंग दैट. 60 days में. हाँ, वो जो भी है, मतलब वी डोंट हैव टू टेक ऑल ऑफ दैट अभी. तो हम 10-12 के लिए बना लेते हैं. नाउ वी हैव कस्टमर बेस, ठीक है, बट दीज आर ऑल assumptions. Because this is a new company, we don't have data. So maybe this is industry benchmarking, this is assumption, whatever. वो क्वेश्चन देख के अपेरेंट हो जाएगा कि ये नंबर्स कहाँ से आएंगे. ये रिटेंशन रेट हमने स्टैंडर्ड तरीके से, आई एम नॉट लेबरिंग दैट पॉइंट राइट नाउ. उसके बाद
DF. If you remember question paper में हमने जैसे solve किया था. Now why are we doing this? Why are we doing this DF, which is the PV factor? It's because we don't have per unit कितना per customer कितना profit आ रहा है, हमारे पास information है नहीं. तो हम बस एक 1 रुपी assume करके चल रहे हैं और 1 रुपी का NPV ले रहे हैं, which will be the same as 1 rupee into PVF, which will be PVF. That's why we इधर हम फिर प्रॉफिट करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया होगा और फिर उसका सम लेंगे. वो डायरेक्टली हम फिर एनपीवी में सम प्रोडक्ट करके कर रहे होंगे. आई एम अज्यूमिंग. या नॉट एनपीवी, मल्टीप्लायर, सॉरी. सो या सो 1 प्लस आर. अच्छा डीएफ तो आता है ना, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट. इसको फ्री कर देंगे हम टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ दिस. डज दिस मेक सेंस? Yeah. जस्ट चेकिंग द फ्रीजिंग एक बार कि सब सही से हो रहा है, सब सही लग रहा है. अब इससे हम मल्टीप्लायर निकाल लेंगे. मल्टीप्लायर विल बी दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस. सम प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, या फिर हम इसको इफ सम प्रोडक्ट इज टू कॉम्प्लिकेटेड टू फॉर यू तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दो. इसका सम ले लो, मतलब सम प्रोडक्ट को 2 स्टेप में ब्रेक कर दो. एक बार प्रोडक्ट ले लो, फिर उसका सम ले लो, एंड देन यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ कस्टमर. तो ये मल्टीप्लायर आ गया. अब इसके ऊपर वापस से तुम्हें वो व्हाट इफ एनालिसिस करना है. व्हाट सॉरी व्हाट इफ नहीं, क्या बोलते हैं इसको, डेटा टेबल. जो टू वे टेबल बोलते हैं इसको. तो या फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ RRs which can be, let's say retention rate is at 80%, right? So let's start from 70%. We'll go to fill, we'll click on series, we have to fill rows. Step value will be say 5%, so 0.05, and we want to go till 90%. This can be anything or it may be given in the question as we saw in that paper. Asha, did this step make sense? How we Why created are we this series? taking different RRs? I forgot. What? Why are we taking different RRs? हाँ, so we are doing a scenario building. उसके ऊपर आते हैं. ये सीरीज कैसे बनाई वो समझे? Yeah. So we start with 70, we go to fill, we click on series, we give the step value as 0.05 because हर 5% का इंक्रीमेंट करना है और 0.9 पे रुक जाना है. तो 70 to 90 का आ जाएगा. अब इधर हम क्या देंगे? अच्छा, वेरियस वैल्यूज ऑफ द इंटरेस्ट रेट. So say 10%, 12%, 14%, 16%. ये हमें क्या देगा? अभी currently this multiplier that we have is for this particular combination of interest rate and retention rate. But what if we want to create a summary table which tells us कि अगर हम if we are able to get the interest rate to this value or if we are able to get the retention rate to this value, our multiplication factor will be this one. So this is useful in taking business decisions. Copy multiplier in that. Arshia, समझी? Yep. So we made a cross tab essentially of various values of interest rates and retention rates. Now, how do we fill data here? That is Excel का जादू. We will just have to select ये पूरा data. Where 0 में you make sure that whatever you want Excel to predict for these combinations. For example, either 75% retention rate or 12% interest rate पे क्या वैल्यू होगी मल्टीप्लायर की, वो हमें निकाल के दे देगा. नाउ मल्टीप्लायर चाहिए हमें, तो टेबल के लेफ्ट टॉप कॉर्नर में मल्टीप्लायर होना चाहिए. And then you select the entire table. Then you go to data, then you go to what if analysis, then you click on data table. Then in the rows, you input whatever is here, which is retention rate. This is the standard value of the retention rate, the current value of the retention rate you'll input. Or the starting value, तुम्हें जो भी जैसे भी समझना हो. और फिर you press, और फिर column में you put ऐसे जो भी arrange है, which is interest rate. And then you click enter. So इससे हमें क्या मिलेगा? I'll just reduce the number of decimals so that this is more readable. Do I have my mouse here? No, man. So I'll just reduce the number of decimals. Okay. Now, see 10% or 80%. 10% or 80%. So ये जो number है, does this match this value here?
It matches, right? Yes. So this tells us कि सही से बना है, डेटा टेबल सही से बना है, कुछ हमने गलती नहीं करी, क्योंकि ये दिस इज आवर सोर्स ऑफ ट्रुथ और वी नो दिस टू बी करेक्ट, और फिर देन वी कैन अज्यूम कि ये सारा सही होगा। और एक बार चेक करना हो मान लो तो इसको चेंज कर लेते हैं, 70% कर लो, तो अब दिस एंड दिस शुड मैच। ये तो जस्ट इनबिल्ट क्यूसीज है सो दैट यू डोंट लूज स्टेप के मार्क्स फालतू। नाउ देयर इज वन लास्ट थिंग दैट वी नीड टू डू बिफोर दिस इज डन, Excel wise, and then there's a little bit of interpretation, which is you select all of these values that we generated using the what if analysis. You go to the home tab, you go to conditional formatting, you go to color scales, you select the first option. Now this will highlight the good numbers, the higher numbers in dark green, and the bad numbers or the lowest numbers in dark reds, and all the shades. So this just, I mean, I don't know. This is pretty obvious that if you increase the retention rate, the multiplier will increase. So it's not that insightful. But मैम ने कराया तो कर देना ही है. It's a 2-click thing. Okay, so now Arja with us. Yeah, I remember the coloring thing. Great. So now there's some थोड़ा business interpretation अगर लिखने का आए तो ये लिख सकते हैं अपन कि if the costs to increase retention rate from 80% to 85% is higher than the corresponding incremental benefit of having multiplication factor go from 3.3 to 3.9, then we don't that's not the optimal solution for us. That's what this table can tell us. So higher numbers are good, but what if they are not feasible business wise? तो ये एक लेवल का, एक और एडिशनल लेवल का एनालिसिस हम कर सकते हैं। और वैसे ही अगर हमें सिर्फ इंटरेस्ट रेट के ऊपर अगर पूछ लिया, 2 वे टेबल ना पूछा, मान लो कि सिर्फ 1 वे टेबल पूछा कि भाई अगर इंटरेस्ट रेट 12% हो गया तो मल्टीप्लायर की वैल्यू चाहिए, उसके नीचे 13% हो गया तो भी मल्टीप्लायर की वैल्यू चाहिए, अगर ऐसा टेबल चाहिए हमें तो वी कैन डू अ 1 वे व्हाट इफ टेबल, and that will also have the multiplier on its left top or whatever we want on its left top. Now I might make a mistake here because I haven't done this, but Just put 80% over here. 20% over here. no, you can go to data. Yeah, that's a good way. You can just copy paste it from here, I guess. Yeah, Sohan is right, but there's another way to do it, which is uh, row input cell you leave blank and column input may you put whatever the interest rate thingy, and then uh, I guess you'll have to select it. Stars to करना है. What I say? Yeah, you have to have another Ah, column at least. yeah. So we'll just bear with me. I'll have to do a little bit of trial and error. हाँ. Okay. नहीं, zero आ रहा है बस. Give me just 1 second. I'll maybe look at the existing sheet. Okay. You put this here. Okay, the beginning of this table, it's a 1 वे table. The beginning of this table is this alone. So you select this and you go till here. Whatever you want has to be on top of where you want it. And then you go to data, what is data, leave row empty, because we are only changing these. Click on interest rate. अभी भी नहीं आया. Maybe you have to select all of this. Sorry guys. थोड़ा confusion. Yeah, thank God. Okay, so does this match? Yeah, it matches. 10% 3.28, 3.28. 12% 3.08, 3.085, which will be 3.09. Yeah. So yes, you are. So sorry, my bad. So whatever you want will be on top of where you want the data to appear. This, and you will select all of this and then do whatever you want. अभी similarly अभी बता ही देते हैं for completeness sake. What if you want interest rate के scenario build करने हैं अगर, so you will pull in multiplier here, select all of this, go to what if analysis. Now column will be blank and row will be retention, and everything is matched.
Arsha, clear? Does this make sense? Yeah. Yeah, we're out of Zoom minutes, so we'll maybe upload this individually and then other things. So consider CLV topic closed from my end. Yeah, we'll look at RFM pivot table and maybe Monte Carlo if we have some clarity on that in the other video. All right, bye bye.